introductory part or introductory concept of chemical kinetics. Middle part consists of core concept, that is, you can say, theoretical part and mathematical deductions or derivations related with the chemical kinetics. And this third section is dealing with the supportive theories to this concepts of chemical kinetics. Till that, what we have seen here, chemical kinetics is a branch of physical chemistry where we are dealing with the rate of chemical reaction and the mechanism of chemical reaction. We also seen what is the rate of chemical reaction. It is the change in concentration upon time taken is called the rate of chemical reaction. Then also we have seen this rate of chemical reaction can be given by two different ways. Number one, that is, you can say, average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Also, we have seen rate of chemical reaction can be given in terms of reactant, can be given in terms of product. No terms with that. Whatever the reactant consumed, accordingly the same amount of the product will be produced. Accordingly, the product will be produced. That is what we have seen here. Furthermore, we have seen there are some of the factors which affect the rate of chemical reaction. So we have seen that is rate law is the first factor. Then rate constant is the second factor, and order of reaction is the third factor which affect the rate of chemical reaction. Also, we have seen what is the molecularity. So molecularity, what is elementary reaction, what is complex reaction, and we have also seen the difference between the molecularity and order of reaction. That is also what we have seen in last lecture. Then afterwards, we note very well that rate law is not sufficient in to calculate the concentration of reactant with time. किसी भी reaction में कितना concentration react हुआ with the time और कितना concentration बचा हुआ है, ये हम लोग नहीं निकाल सकते by using the rate law. So it was a need to have some other derivations, some other format to calculate the concentration of reactant reacted in a given time. So for that, we have proceeded ahead and we have seen integrated rate law. But before that, we have seen order of reaction. Order of reaction is a sum total of exponent in a rate law. Sum total of exponent in a rate law. I think so. This is getting bit blurred. Let me change the camera. Then accordingly, we have it. Okay. So we have seen here in this lecture that when we have discussed the chemical kinetics, we've seen that integrated rate law is useful. It's very important in order to calculate the rate of chemical reaction, and hence we have seen the derivation for that. Using integrated rate law, we can calculate the concentration of reactant with the time. 5 मिनट के बाद कितना concentration react हुआ, कितना बचा हुआ है, 6 मिनट के बाद कितना concentration react हुआ, कितना बचा है, we can calculate that. And for that, we need this integrated rate law. We have seen integrated rate law for first order reaction. We also seen integrated rate law for zero order reaction. Also, we have seen half-life periods for both of first order reaction and zero order reaction. And also, we have seen integrated rate law for first order reaction in gaseous state. Big changes are there. Also, we have seen different modifications for that. वो भी हमने उसके अंदर discuss कर लिया. Clear with this? Now, bit going ahead. थोड़ा सा जैसे हम लोग proceed होते हैं आगे, थोड़ा सा proceed होते हैं. We have seen that here collision theory. कल के lecture में, last के lecture में हमने देखा था collision theory. That is supportive. Collision theory is a supportive to this chemical kinetic concepts of chemical kinetics. So what we have seen in collision theory, we have seen that here collision theory. Okay, for bimolecular reactions. इसके अंदर हमने देखा number one is nothing but you can say collision is must. Number two, as you can say, collision must be with sufficient kinetic energy. Number three is nothing but you can say activation energy. Activation energy. Number four is nothing but you can say here orientation. Number fifth is nothing but potential energy. Potential energy. Number six, temperature dependence. And number seventh is nothing but catalyst. So these are the factors which decide the rate of chemical reaction. So collision theory is a supportive. Collision theory is supportive to chemical kinetics, concepts of chemical kinetics. According to collision theory, these are the factors which affect the rate of chemical reaction. First factor is nothing but the collision. शायद last lecture के अंदर ये discuss किया था कि suppose A reacts with BC to produce AB plus C, है ना? ये रहता है. तो इसके अंदर होता क्या है कि A और B reactant है, AB और C हमारा product है. So according to this theory, that is collision theory, there must be a collision between reactant A and reactant BC. If the collision between these two occurs, then only we can have this product. So most stage is the collision. और हमने ये देखा कि if we have 1 ml of solution
if 1 ml of chemicals, K and B, then 10 raised to 27 collisions per second occurs within that ml. 1 ml के अंदर जो reactant molecule है, उनके 10 raised to 27 collisions होते हैं per second. 10 raised to 27 collisions. It's a big number. That is, you can say, reactant. So if every collision is successful, the reaction is expected to complete within fraction of second. But it never happens. It doesn't happen. So that's why some other factors are there, because every collision is not a successful collision. So we have second factor called as the kinetic energy. Collision between the reactant molecules must, but collision with sufficient kinetic energy is also important. So if collision occurs with a sufficient kinetic energy, then only it converts into the product. Otherwise, it won't convert into the product. Number 3 factor is nothing but the activation energy. Activation energy barrier we have seen in last lecture. That is activation energy barrier. What is here? Suppose this is the graphical representation. This is the energy of reactant increases, and this is the energy of product. So this is the original energy, and this is the energy which goes to the peak transition state. And this energy, जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, this is nothing but the activation energy denoted by EA. So reactant का जो भी energy है, वहाँ से highest state जो होता है, that is nothing but the activation energy. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, वार्म अप करते हैं, लाइक दिस वार्म अप इज मस्ट. उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. दिस एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी अचीव्ड. और जब एक्टिवेशन एनर्जी आएगा तभी जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. दैट हैपेंस ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट यू कैन से एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट. ये उसके अंदर हो जाता है. Remember that is also what we are saying. Furthermore, we are saying there is nothing but the orientation. Orientation means what here? This reaction shows that A reacts with BC to produce A, B and C. तो इससे क्लियर पता चलता है कि A forms bond with the B. A forms bond with the B. अगर A को B के साथ बॉन्ड तैयार करना है तो A इस BC मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से कोलाइड होता है, that matters. A अगर B के साथ कोलाइड होगा तब ये प्रोडक्ट होने के चांसेस ज्यादा है. A का कोलिजन अगर C के साथ होता है तो ये प्रोडक्ट होने की चांसेस नहीं है, because A has to collide with B. So this orientation matters. मतलब how collision occurs, that orientation also matters here in this one. So that is what we can say. The collision theory states that orientation, how reactant molecule collides with each other. Every collision is not successful because collision has to be with proper orientation. A has to collide with B. A अगर B के साथ collide ना होके दूसरे कई डायरेक्शन से collide होता है तो वो reaction successful नहीं होगा. So in that sense, it is very important that collision must be with a proper orientation. सही डायरेक्शन में, सही दिशा से अगर collision होता है तभी जाके प्रोडक्ट तैयार होने की चांसेस ज्यादा है. ये भी उसके अंदर का स्टेप देगा. फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखिएगा कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये अगर देखते हैं हम लोग तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन. सो एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर तक चला जाता है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. लेकिन एक्टिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर का जो डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट द हीट ऑफ रिएक्शन. So this much amount of heat of reaction. This reaction may be exothermic or may be endothermic. If heat is absorbed by the reactant, endothermic. If heat is released by the reactant, that's called an exothermic reaction. But total energy changes during the course of chemical reaction, that must be called as a potential energy. जब reaction शुरू होता है, कई सारे energy के changes उसके अंदर होंगे. तो whatever the total energy change occur during the course of chemical reaction, that has to come under this category of potential energy. और ये हम अच्छी तरह जानते हैं. Highest energy containing state called as a transition state. इसके लिए मैंने आपको याद दिलाया, हम जब 12th स्टैंडर्ड का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर देखते हैं उसके अंदर हमने SN1 और SN2 रिएक्शन देखे, और उस SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर हमने देखा हुआ है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2. हाईएस्ट एनर्जी कंटेनिंग स्टेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट. उसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट ऐसे कहते हैं. सो बी क्लियर है, हाईएस्ट एनर्जी कंटेनिंग स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. दैट इज व्हाट वी कैन से, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करें हम लोग तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर व्हाटएवर द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इंक्लूडिंग इवन ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट एवरी रिएक्शन हैज इट. दैट मे बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन, बट देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी. सो दीस आर द फैक्टर्स जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए. अभी जो बचे हुए दो फैक्टर, दैट इज यू कैन से टेंपरेचर एंड कैटलिस्ट. दीस आर द टू फैक्टर्स व्हिच आर रिमेनिंग फॉर द केमिकल काइनेटिक्स एंड वी हैव टू डिस्कस दैट. What is this temperature and what is this catalyst? How these factors affect the rate of chemical reaction. Let's move to temperature. यहाँ पर लेते हैं हम लोग because yeah. Now the next factor, sixth factor is nothing but you can say temperature. Okay, temperature factor which affect the rate of chemical reaction. अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर सपोज इस रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K
concentration of A to concentration of BC, इस टाइप का रिएक्शन हमारा होगा. इसके अंदर ये क्या आता है? So if we discuss the concentrations, yes, concentration also affect the rate of chemical reactions, but that doesn't affect that much as compared to this K. Or K is affected by the temperature. K is a rate constant of the reaction, and K is affected by the temperature. So K is very badly affected with the temperature. So if temperature increases, K also increases. If temperature decreases, K also decreases. So that's why it matters that what is the temperature. Generally, it has been stated that if temperature increases by 10 degrees Celsius, rate of reaction becomes double. Big learner here. If temperature increases by 10 degrees Celsius, rate of reaction becomes double. मतलब reaction का rate double होता है if we increase the temperature by 10 degrees Celsius. It has been experimentally proven. So that means what? Temperature affect the rate of chemical reaction. How it? So temperature exactly affect the K, and then K affect the rate of chemical reaction. K affect the rate of chemical reaction. That happens. वो उसके अंदर होता है. तो in that sense you can say temperature affect the rate of chemical reaction. That is what we get here. ये इसके अंदर हम लोगों को मिलता है. Now thing is that we have to discuss. Arrhenius has discovered the equation for this temperature dependence. So according to Arrhenius equation, Arrhenius is the scientist who discovered this equation. According to Arrhenius, you can say this K is nothing but A e raised to minus EA upon RT. This is the equation what we get here. This is the equation what we get. And this is nothing but you can say this A is nothing but the fraction of collision. मतलब ये जो reactant है एक दूसरे के साथ जो react हो रहे हैं तो उसके अंदर देखिए ये सारे फैक्टर आते हैं. There should be a collision between A and BC. They should have a sufficient kinetic energy. Then their collision must overcome the activation energy. Then their collision must be with proper rotation. तो हर एक collision successful है. कुछ collision होते हैं जिसके अंदर kinetic energy sufficient होती है, कुछ में नहीं होती है. कुछ fraction of collision ऐसा होता है जिसके अंदर activation energy sufficient होती है. कुछ collision ऐसा जिसके अंदर orientation proper होता है. तो सबका अपना एक fraction है. And this fraction is indicated by this A. तो A indicate the fraction of collisions for these different factors. सब सारे factors के लिए दिखाता है. Potential energy के लिए ये जो factor आता है, this is nothing but the potential which is given by F is equal to E raised to minus A upon RT. ये दिखाया जाता है. So the fraction of collision with sufficient kinetic energy is given by this equation. That's F is equal to E raised to minus E upon RT. This is the fraction of collisions which are with the sufficient kinetic energy. ये इसे दिखाया जाता है. वो potential energy के अंदर भी आता है, यहाँ पर भी आता है. So ये एक fraction. बाकी fraction है orientation का, बाकी fraction है हमारा activation energy के, सारे fraction उसके अंदर आ जाते हैं. That is noted by A. तो A denotes the fraction of collisions. जो अलग-अलग collisions उनका fraction is noted by A. And EA is the activation energy, R is the molar gas constant, T is the temperature. तो इसके अंदर देखिए ना, temperature अगर बढ़ेगा तो ये factor माइनस होने के कारण वो कम होगा तो ये factor बढ़ेगा, और ये factor बढ़ेगा तो K भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. So that means you can say this K is increased with increase in temperature. K is increased with increase in temperature, and according to the rate of chemical reaction increases. So this is according to the temperature. उसी का हम लोग अलग तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम ले सकते हैं इसका. सपोज वी हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद दिस. ओके, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या इस इक्वेशन का. दिस इज Arrhenius इक्वेशन. सो टेकिंग log base of both side, दोनों साइड का अगर log base लेते हैं मतलब K is equal to A e raised to minus EA upon RT. So taking log E minus ln of both side. देखिए this is ln मतलब log base E मतलब ln. अभी log base E कोई नहीं कहता, बस ln कहते हैं. तो लेकिन taking ln of both side, दोनों साइड का ln लेते हैं तो इसके आएगा ln K is equal to ln sorry ये पहले फैक्टर आएगा e raised to, so you can say minus EA upon RT plus ln A, ऐसे फैक्टर आएगा. So this is what we get taking ln. अभी इसी इक्वेशन को हम log base E में कन्वर्ट करते हैं. तो log base E क्या होता है ln के अंदर? ln का log base होता है 2.03 फैक्टर आ जाता है. Here you can say log base 10K is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log base 10A. ये फैक्टर. So this is the final equation which is called as you can say Arrhenius equation to calculate the activation energy और इससे हम लोग activation energy निकाल सकते हैं किसी भी का. अब ये जो Arrhenius equation ये प्रूव किया जा सकता है, बट हमें 12th में जस्ट सीधा लेना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है उसका. सो कर सकते हैं, इजी है, बट हमारे यहाँ पे सीधा उसको लेना है. दैट इज you can say Arrhenius equation.
which gives the temperature dependence of the chemical reaction. Or as I stated, temperature increases, this factor decreases, and that's why this factor increases and K increases. So because being is a minus, उसके हिसाब से that this factor increases, K increases, and if K increases, rate of chemical reaction increases. And जैसे मैंने बताया कि it has been experimentally proven that if temperature increases by 10 degrees Celsius, rate of reaction becomes exactly double. So this is the you can have this is the equation by which we can calculate. और इस equation के साथ हम लोग इसका graph भी निकाल सकते हैं because ये equation दे सकते हैं हम लोग इस equation को और ये इस equation को ले सकते हैं हम लोग और उसका graph निकाल सकते हैं. वो कैसे आप देखिएगा. मैं इसे हटा देता हूँ ये. Okay. अब ये equation देखिए. ये equation हमने यहाँ पे लिखा है. Okay. What was it? Log base 10K is equal to minus A upon 2.303 R into 1 upon T plus log base 10A. This equation can be made analogy with equation of line, that y is equal to mx plus c. So this is y coordinate, this is your m slope of line, this is x coordinate, and this is you can say constant. तो अगर इसका ग्राफ लेते हैं हम लोग तो आप देखिए y coordinate क्या हमारा log k, तो we can say here log k यहाँ पे लेते हैं. What is your x coordinate? X coordinate is 1 by t. 1 by t होता है. ये हमारा था. And this is the constant, no doubt. We should get a graph like this one because this line has a negative slope. The slope of line must be equal to minus A upon 2.303 R. This is the slope of line. ये हम लोगों को slope of line इसके अंदर मिल जाता है. Clear with this? So ये हम लोगों को मिल जाता है. This is the graphical representation. Graphical representation करने के लिए we should have learned this equation called as Arrhenius equation. और इस इक्वेशन का हम लोग दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो हम लोग सॉल्व करके ये आते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करते हैं y is equal to mx plus c, which is called the equation of line. So this is y coordinate, this is x coordinate, this is the slope of line, and this is the constant according to the line. We have a straight line which has the negative slope. So that's the slope of this line must be equal to minus a upon 2.03 r. That is what we get here. Clear with this? So this is you can say temperature dependence according to this one. Clear with this? So temperature dependence के अंदर इतना कहेंगे सबसे पहले बात है कि temperature affects the K, that is rate constant, and that's why temperature increased, K increases, and that's why rate of chemical reaction increases. And the mathematical proof is that this is nothing but the Arrhenius equation. By using Arrhenius equation, we can calculate the K, and using K we can calculate the rate of chemical reaction. This also we can have a graphical representation. Also, using this Arrhenius equation, we can calculate activation energy. If we consider one reaction and its rate of reaction at one temperature is known, can we calculate at another temperature? That is the factor. So we have to discuss this now. So let's move for this. It is also temperature dependence, no doubt at all. We have to discuss temperature dependence itself. So we have this Arrhenius equation. क्या है Arrhenius equation हमारा? Log base 10K is equal to minus A upon 2.303 RT plus log base 10A. This is what is the Arrhenius equation. Now, अभी देखिए इधर temperature factor यहाँ पे आता है. So if we consider a reaction which has a rate of reaction at one temperature, can we calculate rate of reaction another temperature, T1 or T2 temperature? So we have to calculate rate of reaction at T1 and T2. ये हमें calculate करना है. So we can have here log base 10 K1 is a constant rate constant of the reaction at temperature T1. So is equal to minus EA minus center minus EA upon 2.303 RT1 plus log base 10A. Okay, this is equation number 1. Then log base 10 K2. देखिए rate of reaction निकालने का वही equation है हमारे पास. तो this is at temperature T1. This must be at temperature T2. K1 must be at temperature T1. K2 must be at temperature T2. क्योंकि temperature बदलेगा तो क्या बदलने वाला है? So when we change the temperature, तो K बदलता है. K depends upon the temperature more exactly. So that's why T1 temperature, this K1, K is K1, and if T2 temperature, this K is K2. So K2 must be equal to minus EA upon 2.303 RT2 plus log base 10A. This is equation number 2. Now, we have to calculate activation energy. So taking the difference of both the equation. So taking difference. Okay, taking difference. K2 minus K1. तो हम लोग बोल सकते हैं log base 10 K2 minus log base 10 K1. Okay, तो subtracting equation 2 from equation 1. K2 minus K1 हमने कर दिया. अब देखिए K2 पहला है तो ये लिखना है पहला, ठीक है.
सो अभी ये इसमें से केवल माइनस करना है, तो हियर माइनस EA अपॉन 2.303 R, ओके, यहाँ पे आएगा T2। अब ये देखिए माइनस पहले से माइनस है और हम ये भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इधर क्या आएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT1 ऐसा आएगा। और ये A जो है इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस ए माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता नहीं, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन के अंदर, सो नीड नॉट टू राइट दिस वन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, log K2 upon K1 मतलब log A upon B, तो क्या लगेगा log A minus log B मतलब log A upon B, तो here it will be log base 10 K2 upon K1, K2 upon K1 आएगा, इससे हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया here। अब ये इस तरफ लेते हैं, इस तरफ लेते हैं हम लोग, बिकॉज ये प्लस ए माइनस है, तो here it will be EA upon 2.303 RT1 minus EA upon 2.303 RT2, ये आएगा। Therefore, log base 10 K2 upon K1 is equal। अभी देखिए इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से बहुत सारे फैक्टर को हमारे पास T1 T2 डिफरेंट है, तो we can take it out common। सो कॉमन क्या निकलेगा आपका EA upon 2.303 R, ये आपको कॉमन आएगा इन ब्रैकेट 1 upon T1 माइनस 1 upon T2 आएगा। अभी बस ये फैक्टर अगर सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करना है अच्छी तरह जानते हैं। सो फाइनली वी गॉट log base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R in bracket T2 minus T1, so T2 minus T1 upon T1 T2। So this is the equation by which we can calculate if rate of reaction at T1 temperature is known, we can calculate the rate of reaction at temperature T2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक रिएक्शन दिया जाता है और मानो उस रिएक्शन का रेट x है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोग टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 5 डिग्री से बढ़ाते हैं, तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा? फॉर दिस वी कैन हैव दिस इक्वेशन। सो हमें K1 पता है व्हेन टेम्परेचर T1 है, हमें K2 निकलना है जब टेम्परेचर T2 बनाया गया है, सो निकाल सकते हैं। या K1 K2 बदला हुआ है तो उसके आधार पर T1 T2 निकाल सकते हैं हम लोग। एनी फैक्टर वी कैन कैलकुलेट बिकॉज़ हम ये अच्छी तरह जानते हैं rate of reaction depends upon the temperature and temperature affects the K, so that's why this is the Arrhenius equation which is useful to calculate the rate of reaction at T1 temperature is known, we can calculate the rate of reaction at temperature T2, so that is what we can say। तो ये हम लोग को उसके हिसाब से इक्वेशन मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस। क्लियर विद दिस? इसके एक थोड़ा सा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कहा जाता है, थोड़ा सा ग्राफिकल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हाउ इट इज। ओके, सो ग्राफिकल, अब देखिए दिस इज यू कैन से activation energy, activated molecules energy, and this is you can say temperature। So we can have this is okay, so this is T1 temperature and this is you can say T2 temperature। दो कर्व दिखते हैं, अब देखिए ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है वो एक्सिस पे दिखाया हमने और इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर दिखाया। टेम्परेचर इस तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं। सो ये T1 टेम्परेचर का कर्व इस तरीके से जाता है और ये T2 टेम्परेचर का कर्व है। अब वो देखेंगे, ठीक है, T2 टेम्परेचर का कर्व है। सो अभी होता क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा जाता है, ये इस तरीके से जाता है और ये यहाँ से जाता है, ठीक है। नाउ सी दिस इज यू कैन से ये जो T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे हमारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। मतलब हमने ये देखा कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स हैज टू बी एक्टिवेटेड, अनलेस एंड अनटिल मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड दिस रिएक्शन इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो हम लोग को ये मिल जाता है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे इतने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड है, सपोज ये मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड है। अभी T2 टेम्परेचर पे तो ज्यादा ही है, यहाँ तक है, मतलब ये तो है एट द सेम टाइम ये भी इसके अंदर ऐड होता है। तो इसके अंदर है T1 is less than T2, मतलब T2 is greater than T1। सो मानो ये टेम्परेचर अगर 30 डिग्री है तो ये 30 से ज्यादा है, 31, 32, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है, और जैसे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ता है सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। दैट इज व्हाट हैपेंस हियर, ये इसके अंदर आ जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से दिस इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम लोग इस हिसाब से इसके अंदर मिल जाता है। क्लियर विद दिस? So that is we can have temperature dependence of the reaction. Now we are turning towards the last factor, nothing but you can say catalytic dependence। एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन पूछा जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन पे सॉल्व होने वाले हैं। So that's why this is Arrhenius equation।
RNA equation पूछा जाता है when the rate of reaction at one temperature is known, can we calculate the rate of reaction at another temperature? तो 100% we can solve it. So that's why this derivation is very important. JEE NEET point of view भी बहुत ज्यादा important है. आप अगर पिछले साल के कितने कौन से भी साल का अगर JEE NEET का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखते हैं, खास करके JEE का, तो आपको इस न्यूमेरिकल के ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं. और इसके अंदर ये जो बात मैंने बताया कि if temperature is increased by 10 degrees Celsius, rate of reaction gets doubled. ये बहुत important है. So please go through it. According to me, it's very important for JEE NEET or board to again. Okay. Now we are turning towards last lecture. We are turning towards last lecture and last content, and that's in the catalyst. Last topic, that's what is a catalyst. So we have to discuss the catalyst dependence of the chemical reaction. How reaction depends on the catalyst. अब ये तो हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आए हैं. हम जानते हैं अच्छी तरह कि rate of reaction depends upon the catalyst. Catalyst is the substance which increases the rate of chemical reaction. हम अच्छी तरह जानते हैं, स्कूल लाइफ से जानते हैं. So actually catalyst क्या करता है? हम स्कूल लाइफ से ही देखते हैं कि catalyst is the substance which increases the rate of reaction. But actually catalyst क्या करता है? What actually catalyst does? That is very important for us, and that's why catalyst क्या करता है हमारे लिए important है. ये यहाँ पे आता है how catalyst increases the rate of chemical reaction. तो अब देखिएगा कि suppose हमारे पास एक reaction है, that is KClO3. ये decomposition reaction है, decompose to produce KCl plus O2. ये आता है. अभी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे twice लिखना जरूरी है, because twice लेंगे तो ये twice KCl बनेगा और यहाँ पे thrice O2 बनेगा. This is a decomposition reaction. अभी इस रिएक्शन के केस में ये हमने विदाउट कैटलिस्ट हमने कंडक्ट किया, और सेम रिएक्शन हमने विद कैटलिस्ट कंडक्ट किया. twice KClO3 gives you twice KCl plus twice O2. Here is MnO2. अब देखिए, this is the first reaction which is carried out without catalyst, and second time it is carried out with the catalyst. यहाँ पे MnO2 करके कैटलिस्ट है. So इस रिएक्शन का रेट कम होता है और इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है. रीजन क्या है? Reason behind that. Actually catalyst क्या करता है? Actually catalyst क्या करता है? So catalyst is the substance which decreases the rate of chemical reaction. Catalyst is the substance which decreases the rate of reaction. So we can see here. इसका नाम अगर देखते हैं तो suppose this is the reaction. Okay, so this is the reactant and this is product, and this is the first curve without catalyst, and the second curve is with catalyst, like this one. So देखिए, this is without catalyst, and this is second is with catalyst. तो होता क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए कि this is the activation energy, this is the activation energy. तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि पहला जो कर्व दिखता है वो पहले रिएक्शन का है विदाउट कैटलिस्ट, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और दूसरा जो कर्व दिखता है वो विद कैटलिस्ट है. तो कैटलिस्ट हैज द कैपेसिटी टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट हैज द कैपेसिटी टू डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी. तो उसका एग्जांपल ऐसा है कि मानो हम लोगों को दीवार से छलांग लगाना है, किसी दीवार से छलांग लगाना है. हम लोग सब यहाँ पे जो दीवार से छलांग लगाना है, हमारे सामने अगर 3 फीट का दीवार है तो हमें उसके ऊपर सबको छलांग लगाना है. 4 फीट का दीवार बना जाए उसके ऊपर ऐसा, भाई सब तो 4 फीट की दीवार के ऊपर से छलांग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर 4 फीट का दीवार अगर छोटा करेंगे, 3 फीट का करेंगे, 2 फीट का करेंगे, तो सारे के सारे लोग उस पर छलांग लगाएंगे. So this exactly happened here. So if this activation energy decreases, then most of the reactant molecules get converted into the product. Most of the reactant molecules get converted into the product. Product में convert होते हैं. That's what happens here, and that is what we can say. This is nothing but you can say activation energy इसके अंदर इस तरीके से आ जाता है. You have with this? So that is the activation energy what we get here. You have with this? So how this activation energy? अभी इसके लिए दूसरा एक example है, वो है that is you can say H2O2 का. You can say twice H2O2. Twice H2O2 gives you twice H2O plus O2. This reaction is carried out without catalyst and with the catalyst, that is iodine. So if we carried out without the catalyst, this activation energy is 75 kilojoule इतना होता है, और वही with catalyst करेंगे तो 57 kilojoule इतना होता है. देख लेते हैं ये फर्क है. दोनों रिएक्शन में फर्क देखिएगा कि अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो H2O वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम लोग विदाउट कैटलिस्ट अगर कंडक्ट करते तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी 75 किलोजूल. दिस एक्टिवेशन एनर्जी 75 किलोजूल. उसी रिएक्शन को अगर हम लोग आयोडीन के प्रेजेंस में कंडक्ट करते तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी 57 तक नीचे आता है, मतलब सेकंड ग्राफ जैसे मिलता है 57.
जैसे कि हाइट कम कर दे, जैसे मैंने बताया कि जंप करने के हाइट कम कर दे, उस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 20 किलो जूल से डिक्रीज होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल से डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हैज टू इंक्रीज. So catalyst increases the rate of reaction. How catalyst increases the rate of reaction? So catalyst has the capacity to decrease the activation energy. तो जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 75 किलो जूल है, इस रिएक्शन का वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 57 किलो जूल आता है. So this is the way how catalyst increases the rate of reaction. मतलब हम जो बचपन से पढ़ते आए थे कि catalyst is the substance which increases the rate of reaction. Actually, how catalyst increases the rate of reaction? The catalyst is the substance which has the capacity to decrease the activation energy. So this is with the example, it's clear that if the decomposition of H2O2 is carried out without catalyst, then its activation energy is 75 kJ. And if the same reaction is carried out with iodine, then its activation energy decreases and it's come to 57 kJ. यहाँ तक इसके अंदर आ जाता है. Clear with this? And that is what we can say the activation energy हम लोग इसके अंदर मिल जाता है. So this is the catalyst how increases the rate of reaction. Clear with this? This is the thing. Or with this chapter theoretically gets over here. So chemical kinetic chapter theoretically यहाँ पे खत्म हो जाता है. इसके अंदर कई सारे फॉर्मूले हमने देखे, कई सारे डेरिवेशंस हमने देखे, दैट्स व्हाई इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी उसी हिसाब से देंगे. तो फॉर्मूले हमने कहाँ का देखा? सबसे पहला देखा हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन. उसके अंदर भी दो रेट देखे हमने, दैट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट. उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेईई नीट में न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर आते हैं. जेईई नीट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर टॉपिक देखते हैं हम लोग, खास करके नीट का देखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो नीट के अंदर पूछा जाता है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो माइनस डी अपॉन डी हमने देखा था वो. फिर उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है जिसके अंदर हमने दो डेरिवेशन देखे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. उसके अंदर भी देखा हमने हाफ लाइफ पीरियड एंड फॉर बोथ ऑफ द रिएक्शन. और तीसरा डेरिवेशन देखा था जिसका आरएनएस इक्वेशन हियर, जो हमने देखा ln k is equal to a upon 2.03 upon rt plus log base 10 a. So this is the आरएनएस इक्वेशन और इसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. क्लियर विद दिस? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय. अपील करूंगा आप में से जिनको ये टॉपिक नहीं समझा, प्लीज पढ़े थोड़ा सा और डाउट और डिफिकल्टी पूछे ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे जा पाए. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो. थैंक यू.